Police Academy, Sri A.S. Sarajanji, Officer Trainees of the 74th batch of the Indian Police Service, Officer Trainees from Bhutan, Maldives, Mauritius and Nepal, distinguished faculty and officials of NPA, ladies and gentlemen. I convey my heartiest congratulations to all the officer trainees. You all deserve high praise for your merit, proven by your getting into the much respected services. I will cherish my memories of this visit to the National Police Academy named after Sardar VALLABHBHAI PATEL, whose very mention inspires every Indian. Nearly 12 years after independence, Dr. Rajendra Prasad had written, and I quote, that there is today in India to think and talk about is very largely due to Sardar Patel's statesmanship and firm administration. I end quote. I take this opportunity to re-emphasize on behalf of all fellow citizens our gratefulness to the Iron Man of India. This academy is also an outcome of his foresight. I am glad to note that your academy song conveys this sentiment. लोहे जैसा हिम्मत है, लोहे सा जज्बा अपना, आंखों में लिए चलते हैं हम, लौह पुरुष का सपना. If you remain steadfast to pursuing the dreams of Sardar Patel, you will definitely make immense contribution to the country and its people. I think it is important to remind young officers like you a famous statement of Sardar Patel. Appealing to the officers of newly independent India, he had said, and I quote, "Your predecessors were brought up in the traditions in which they kept themselves aloof from the common run of the people. It will be your bounden duty to treat the common man in India as your own." Unquote. Ladies and gentlemen, this academy has been making great contribution for several decades by nurturing leaders for the Indian police. When the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the nation acknowledges the rich contribution of our police force in sustaining and strengthening the world's largest and most vibrant democracy. The Indian police has also made its huge contribution in preserving the unity of the country, which was shaped by Sardar Patel. Thousands of brave police personnel have laid down their lives for the cause of India's internal security. Their names are etched on the wall of valor at the National Police Memorial in New Delhi. I offer my humble salutation to those valorous children of Bharat Mata. Paying respect to the brave hearts at Matthias column in this campus was a very touching experience to me. I once again salute the memory of the IPS officers who sacrificed their lives at the altar of duty. Dear IPS professionals, the burden of colonial past and feudal habits still affect many aspects of behavior and governance in our country. That is why liberation from the mindset of slavery for those who still retain it has been identified as one of the national priorities. Let us always remember the simple fact that the colonial powers developed policing systems based on consent and participation of citizens in their own countries. But they promoted policing based on the fear among citizens in colonies like India. Police is the most visible organ of the government. When the police force commands trust of the people, it enhances the image of the government.
The police will command respect and trust only when the entire force under you to the last constable displays alertness, sensitivity, and honesty. Dear IPS professionals, right since the beginning of your career, you will be in leadership positions. The quality of your leadership will determine the effectiveness and morale of the force led by you. It will also touch countless lives. As the leaders of your force, you have to keep in mind and demonstrate through action the 5 fundamental attributes of integrity, impartiality, courage, competence, and sensitivity. The responsibility of prevention and detection of crime and upholding the rule of law is becoming more complex, dealing with terrorism, insurgency, militancy, ideology-driven violent extremism, communal violence, large networks of organized crime, and other threats to internal security requires high levels of motivations, skills, and perseverance. Cyber crimes and issues related to social media pose novel challenges. Technology-driven policing is needed to combat high-tech crimes. Police processes have to be partners in progress of the country and transformation of the society. Police officers like you are going to play the roles of change agents in India's achieving greater prosperity while ensuring sustainable development, especially inclusion. By inclusion, I mean inclusion of that last person, the most deprived person, the most vulnerable person. That person should be at the center of your concerns. You should be sensitive to the plight of the voiceless. You have to ensure that an illiterate poor man living in a remote corner of the country gets sympathetic support at the local police post. Dear IPS professionals, Rashtrapita Mahatma Gandhi had written, and I quote, "My life has been an open book. I have no secret and I encourage no secrets," unquote. Transparency and friendliness demonstrated by police officers gets talked about among the people. It is said that the real worth of a person is determined by what he does when nobody is watching. Let me add to this and say that everything big or small that you do will come to be known to everyone. Imagine that you are living in a glass house and let your life be like an open book. Try to fill the book of your life with your own stories of compassion, helping the underprivileged, earning the love and support of the people, yet being firm and decisive. Let the criminals tremble with fear at the very thoughts of the police, but at the same time, let the common citizen look at the police as a friend and savior. If your team discharges its duties well, approval and trust of all stakeholders will follow as natural consequences of your genuine efforts. At times, you may encounter challenges, even unfair adversaries. But I assure you that in the end, truth alone triumphs. Satyameva Jayate. I appeal to you to march ahead through the challenges of your career with a clear consequences, and I bless you with an illustrious future ahead. Dear IPS professionals,
In line with our stated national priorities, Nari Shakti has to play a major role in achieving the targets we have set for ourselves during the Amrit Kal. A truly Atmanirbhar Bharat presupposes Atmanirbhar Nari. It is very rightly said that when you invest in a woman, the women invest in everyone else. It is heartening to note that women are demonstrating greater participation in our democratic process. The rising share of women voters has been one of the biggest achievements of the Indian democracy in recent times. The leadership pipeline of women has to become larger and stronger in every walk of life. Larger participation of women results in better overall development. I have been told that Scandinavia countries, women constitute nearly 30% of the police force. It is a fact worth highlighting that the Scandinavian countries having the largest average women representation in the police are also among the top-ranking countries in terms of human development indices. We should quickly move ahead from the phase of empowering women to the stage of women-led development. It is already happening in many fields. It must happen in a much bigger way. I must emphasize that women in leadership positions like the lady police officers sitting here should always help other women, especially the vulnerable. In fact, if every woman stand up for the weaker ones among them, the society will experience a great transformation. I am happy to note that gender-related inputs are integrated into your training modules. I am extremely delighted to know that for the last 3 successive benches of the IPS lady officers trainees have been recognized as the best probationers. Dear IPS probationers, crimes against women remain a blot on our society. Let us all resolve to bring about transformational changes. You have to ensure that a girl traveling alone at late nights feels safe. Everyone has to ensure that fellow citizens follow the fundamental duty of denouncing practices derogatory to the dignity of the women as stated in our Constitution. Before I conclude my speech in English, I like to say something in my mother tongue, in हिंदी. बच्चे मैं आज बहुत खुश हूँ. पुलिस ऑफिसर्स को देख के मुझे भी लगता है कि उनके ड्रेस को, उनके चेहरा को देख के मुझे लगता है भी मैं भी बहुत यंग हूँ. मैं साथ कायस मेरा शरीर तो झुक रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी स्टेप्स करी हूँ. जो पुलिस ऑफिसर्स रास्ते पे जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लगता है यस ये लोग समाज के ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं लोगों का हेल्प करने के लिए. मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती. उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. वो भी समाज के बुराइयों को, समाज के जितने चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो भी तैयार है. आज जो 3
ऑफिसर्स अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ बताते थे। पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ क्राउडनेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पुलिस फोर्स जाते हैं और क्राउड को कंट्रोल करते हैं। आईन श्रृंखला उनके हाथों में है। आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, आईन के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन, लेकिन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बहुत अच्छी तरह वो बयान करते थे। सर्विस कहा जाता है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। टाइम, ऐसे टाइम में आप लोग आए हैं, अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने सर्विस में। जो ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा, उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा। इसीलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा ऐसे होना चाहिए। ऑफिसर्स, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन युग में पदार्पण किए हैं। हम वो युग में नहीं है जहां उनको प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन कहा जाता था, क्योंकि शासन करने के लिए। हम शासन नहीं, हम सेवा करते। बाएं हाथ में किताब के, लॉ के, नियमों के प्रावधान, दाएं हाथ में डंडा और एक पेन। कहा जाता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन चलाने के टाइम सोचना चाहिए, मैं जो आज जो चैलेंजेस मेरे सामने है, उस चैलेंजेस को किस तरह मैं बयां करूं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकेडमी को। एक योग सेंटर भी यहाँ खोला है। 2 क्राउड या 2 पर्सन या जो कोई भी ऐसे जगह, तो वो तो टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम शांति से, हम धैर्य से उसको टैकल करें। इसीलिए हम रिपोर्ट लिखने के पूर्व 50 बार सोचना चाहिए, मैं इस नोटबुक में या इस रिपोर्ट में क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। मैं जो छोटी थी उस टाइम तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव थोड़ा था। लोग कहते हैं, ये बच्चों को कहते हैं तुम जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं पुलिस आ जाएगा। ज्यादा खाओ, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहीं कहीं ये मेंटालिटी अभी भी गांव-गांव में है, अभी भी दूर दराज में है। लोग डरते हैं अपने भाव को, अपने परेशानी को, और झेलते रहते हैं। कहीं इससे ज्यादा मैं परेशान ना सामना करूं। इसलिए कभी कभी मैंने देखा, मैं जब थी, कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नजदीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है जो एक के पत्थर को भी पिघल देता है। वो भावना
होना चाहिए। ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, जो भी ऐसे काम किए ये मेरे ही, ये भी मेरे हैं। मेरा जो लोग जो भी किए, कोई सी परिस्थिति में भी किए, उसको कैसे अपने अंदर में ही सॉल्व करे और ऊपर को जाने ना दे। जाने से फिर ज्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम अपने हाथ में ही ले लो। मैं देखती हूँ यहाँ जितने यंग ऑफिसर्स है, कहते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष के तरह झुकाव होते हैं, फलंती वृक्ष जैसे नमन्ति बुद्धे, जो ज्ञानी लोग होते हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के लिए अब तो करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसी रास्ते को चुने, क्योंकि आप कर पाएंगे, मैं देखती हूँ आप करेंगे। आप जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे लगता है आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दूसरों से अलग, ये देश हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं, कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े नहीं। मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, ये सब मेरे हैं। ये मेरा काम है, मैं अपने से इसको सुलझाऊं, वो आप कर पाएंगे। ये मॉडर्न युग, ये कंप्यूटर युग है, ये साइंस युग है। आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप इनोवेटिव वाले हैं, इनोवेटिव आइडिया आपके पास है। कैसे हम करेंगे इसको टेकल, इट इज अप टू यू, आप कर पाएंगे। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान